স্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব বিচৰা 4.5 লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা শেষ নোহোৱা পৰ্যন্ত মাহত তেওঁলোকৰ বেংকৰ একাউণ্টত 300 টকাকৈ লাভ কৰিব। আমি সকলোৱে জানো যে অসমত বহুত দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে যোনে পৰীক্ষাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত পুষ্টিকৰ খাদ্য গাখীৰ এগিলাচ ফল মূল খোৱাৰ বাবে আৰ্থিক পৰিৱেশ নাথাকে, কিবা কিতাপ এখন কিনিব খুজিলে সুবিধা নাথাকে, কাগজ বহি কিনিব খুজিলে সুবিধা নাথাকে, আৰু কোনোবা শিক্ষকৰ ঘৰলৈ গৈ কিবা এটা শিকো বুলি ক'বলৈ বা যাবলৈ পৰিবহনৰ খৰচ নাথাকে। তাৰোপৰি এই জলপানীটো পোৱাৰ লগে লগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত বিশেষকৈ দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত এটা আত্মবিশ্বাস আহিব যে চৰকাৰে নিশ্চিতভাৱে আমাক বিনামূলীয়া নামভৰ্তিও কৰি দিব, ভৱিষ্যতে নিযুত মইনা আঁচনিও দিব, আৰু এখন আত্মবিশ্বাসী অসমৰ আমি অধিকাৰী হ'ম। নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত যাতে নেতিবাচক চিন্তা আহিব নোৱাৰে, কেনেকৈ পঢ়িম, ঘৰত টকা পইচা নাই, পঢ়ি কি লাভ হ'ব, পঢ়িলে চাকৰি পাম নেকি, এই ধৰণৰ নিগেটিভ চিন্তা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মনত যাতে কেতিয়াও ঠাই পাব নোৱাৰে, তাৰ বাবে জীৱনৰ আৰম্ভণিতে আমি প্ৰেৰণা যোগোৱাৰ কামটো আৰম্ভ কৰিব বিচাৰোঁ। আজিৰ এই আঁচনিখন সেই দিশত এটা অন্যতম প্ৰভাৱী পদক্ষেপ। 4.5 লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰী উপকৃত হ'ব, দেউতাক মাকসকলৰ আৰ্থিক সকাহ হ'ব। মই শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া আৰু শিক্ষা বিভাগক এই সুন্দৰ আঁচনিখনৰ বাবে অভিনন্দন জনাইছোঁ। हमारे जो मैट्रिक का परीक्षार्थी होते हैं उनमें कोई परीक्षार्थी काफी गरीब परिवार से आते हैं, किताब नहीं होते हैं, नोट्स बुक नहीं होते हैं, और परीक्षा का प्रारंभ में अगर कोई चाहे कि एक दूध भी पिया जाए वो भी पीने के लिए घर में पैसा नहीं होते हैं। तो इसलिए असम गवर्नमेंट ने एक नया स्कीम आज से लॉन्च किया है कि हम सारी मैट्रिक परीक्षार्थी को महीना 300 रुपया देते जाऊंगा जब तक उनका परीक्षा कंप्लीट नहीं होते हैं। आगे जाके कॉलेज में उनको हम लोग फ्री एडमिशन भी दिलाऊंगा, और हमारा पास छात्रियों के लिए और प्रभावी स्कीम है, जो स्कीम का आधार पर उनको महीना 1000 रुपया तक भी स्कॉलरशिप मिलेगा। एक पॉजिटिव माइंडसेट बने, लोगों का मन आत्मविश्वास से भरे, इसीलिए ये स्कीम का आज हम लोग शुरुआत की। मैं এটা কথা কলো যে গুৱাহাটীৰ বহুকেইখন স্কুল কৃত্ৰিমানৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ এটা অনুৰোধ আছিল যে আপোনাক যদি আমি লগ পাওঁ এই কথাটো এটলিষ্ট ক'বলৈ কৈছিল, বিশেষকৈ ৰুক্মিণী গাঁও বহুকেইদিন তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ হেৰিতে বন্ধ হৈ থাকে, যদি আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰত কিছু কৰি দিলে। আমি সকলো বিদ্যালয়ক 7 পৰা 8 কোটি টকাকৈ দিছোঁ। নতুনকৈ বিদ্যালয় নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে, আৰু মই ভাবোঁ যে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে প্ৰত্যেক বছৰে 200 পৰা 300 স্কুল নতুনকৈ বনাই আছে। निश्चय अपनार अनुरोध तो तेखेते विवेचना करिब। कल जो बोले कि हमें बिल का बारे में कल तो मैंने काफ़ी बोला हूँ विधानसभा में। असम असेंबली में कल बहु विवाह को बंद करने के लिए एक विधायक को स्वीकृति मिला। इस कानून का अनुसार असम में बहु विवाह पॉलीगेमी नहीं होगा। अगर कोई घर में एक पत्नी होने का बावजूद अगर दूसरा शादी करने का कोशिश करेगा उनको 7 साल का जेल होगा। साथ में अगर वो छुपा के शादी करते हैं तो उनको 10 साल तक शादी होगा, 10 साल तक उनका गिरफ्तार होगा, जेल होगा। कल असम असेंबली में अच्छा चर्चा हुए, और ये जो पॉलीगेमी का बिल हुए
जो कानून तक हमने परिवर्तन किया, इसमें काफी विधायकों ने सपोर्ट किया, सजेशन दिया और एक बहुत ही अच्छी वातावरण में हम लोगों ने ये पॉलीगेमी को बंद करने का बिल को पारित किया। आसाम टॉक्स, আপোষবিহীন অসম কণ্ঠ।